Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. Hope you all are fine. So, coming towards the business, our topic is measurement of earthquakes or measurements of size of earthquakes. So, earthquake जब कहीं किसी जगह में आता है तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं. तो उसके लिए यूजुअली this measurement is expressed in two ways. Rather, it is described by two terms. One is intensity, other is magnitude. So both these terms they are used to express the measurement or the size of earthquakes rather. So पहले वाली क्लिप में हम इंटेंसिटी ही लेंगे और दूसरी क्लिप में जो दूसरा पार्ट इसका होगा उसमें हम मैग्नीट्यूड और मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड देखेंगे. तो पहला पार्ट जो है उसमें हम इंटेंसिटी फैक्टर्स फैक्टिंग द इंटेंसिटी एंड मेजरमेंट वो देखेंगे. सो लेट्स फर्स्ट know the definition of these two terms, intensity and magnitude of earthquakes. So because these are expressed in terms of these two, intensity and magnitude. So intensity is इसको हम शिद्दत कहेंगे simply. जब भी earthquake आता है तो नॉर्मली आपने न्यूज़ में भी सुना होगा intensity of earthquake, magnitude of earthquake. So intensity is simply the damage and destruction or simply the effect of earthquake in terms of damage and destruction on humans. That means on living and non-living things on the earth wherever this earthquake rocks a particular area. So हम इसको assign किस तरह express करते हैं, हम numerals इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, Roman numerals. So that means this intensity, it's a number. Okay, it's a number that describes the severity of an earthquake in terms of its effect, severity of it in terms of its effects on the humans, living things, non-living things. That means human-made structures or natural structures on the surface of the earth. So simply put, it's a number written as numeral describing the severity of an earthquake in terms of its effects on the earth's surface and on humans and their structures. So that means this intensity जो है it is a qualitative measure. Okay, it is not a quantitative measurement of earthquake. It is actually a qualitative measure of actual shaking and destruction at a location during an earthquake and is assigned as Roman capital numerals. So इसका मतलब है कि जो intensity है it is somewhat subjective measure. Okay, subjective measure. Why? Because that it is based on direct observations by individuals rather than on instrumental measurements. Okay, जब हम इंटेंसिटी डिस्क्राइब करते हैं किसी एरिया की, जब अर्थक्वेक वहाँ पे आता है तो इंटेंसिटी इट इज़ बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव, इट्स अ क्वालिटेटिव मेजर, it is subjective in nature because it is based on observations, direct observations by individuals, by humans in an area rather than an instrument. इसके लिए हम सीस्मोग्राफ वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, ये सिंपली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है. उसकी बेस पे हम फिर इंटेंसिटी वैल्यू जो है कितना डैमेज हुआ होगा, डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, उसके बेस पे हम फिर इसको असाइन करते हैं कोई न्यूमरल. ठीक है, बिकॉज ये जो ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन है सो इट वे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, बिकॉज किसी एरिया में अगर हम देखेंगे टू persons will experience different effect, their observation, their perceptions will vary. So, इसलिए इसको हम कहते हैं it is somewhat subjective measure because it is based on the observation by individuals rather than instrumental measurements. So different observers may assign different intensity to a single earthquake.
Nevertheless, it is more direct indication of the impact of a particular seismic event on humans, on structures. Okay, इसीलिए जब हम कोई असाइन करते हैं तो उसके लिए हमें सैम्पल ऑफ फेल्ट रेस्पॉन्सेज पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है. सो दिस मे रेंज फ्राम ओके बिकॉज अर्थक्वेक जो है कभी कभार सिंपल अर्थक्वेक आता है, माइल्ड शेकिंग या बिल्कुल फीबल अर्थक्वेक आता है. इतने शेकिंग जो ट्रेमलिंग उसकी इतनी फीबल होती है कि जो इंसान भी नहीं उसको जो है एक्सपीरियंस कर पाते हैं, खाली इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं. ओके, सो माइल्ड जर्क्स अगर होंगे, माइल्ड शेकिंग अगर होगी तो उसको भी कुछ इंसान जो डिफरेंटली फेल्ट करेंगे, उनकी परसेप्शन डिफरेंट होगी. जो ग्राउंड में चलते होंगे या ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं कभी कभार वो उनको पता ही नहीं चलता है, लेकिन जो अपर स्टोरीज में होते हैं उनको वो शेकिंग फील होती है. ओके, so that means different shaking, different impact will be there. So that means it may range from mild jerk, okay, to moderate shaking. If the earthquake is bigger, then the destruction will be higher. That means complete devastation of the area. That means different value will be assigned to that particular event. So this is part first of this earthquake. So that means कि earthquake जो है, earthquake intensity जो है, this is based on direct observations and there is no instrument required for the measuring this intensity of earthquakes. Whereas magnitude is actually a quantitative measure. It is based on it is based on an instrumental record, that means seismogram. Okay, wave amplitude or the record made by the seismograph in the form of seismogram, that on the basis of the record of the earthquake, then record of the highest amplitude, wave amplitude recorded. Okay, then this magnitude is calculated. So that means it is a quantitative measurement. It is defined as the amount of energy released during an earthquake. So more the amount of energy released, that means higher will be the magnitude and the greater will be the effect of earthquake, that means damage and destruction. So here point is this, intensity of earthquake is directly related to the amount of energy released. बहुत सारे फैक्टर्स जो इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं वो हम दूसरे क्लिप में देखेंगे, पार्ट सेकंड में.